हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिट के साथ, एक नए सबक के साथ मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि सेलों से ऑर्गेनिज्म तक का सफ़र कैसे होता है। व्हाट डू यू एंड अ हाउस प्लांट हैव इन कॉमन? आप में और एक घर के अंदर लगे हुए पौधे में क्या चीज़ कॉमन है? सोच सकते हैं आप, क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ मुश्तरक है? जी, वो जो मुश्तरक चीज़ है वो सेल है। यानी पौधे हों या जानवर हों, वो किससे मिलके बने होते हैं? छोटी छोटी ब्लॉक्स से, छोटी छोटी ईंटों से मिलके बने होते हैं, उन्हें सेल कहते हैं। चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, वो सेलों से मिलके बने होते हैं। और सेल जो हैं उनके अंदर कुछ चीज़ पौधों के सेलों में या जानवरों के सेलों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और कुछ थोड़े से फ़र्क भी होते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ये दोनों सेलों में होते हैं। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तो सेल होता क्या है? द बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is called cell. They are the basic units of every living thing. हर जिंदा चीज की जो बुनियादी इकाई है उसे सेल कहते हैं। सेल जब आपस में मिलते हैं और एक टीम बनाते हैं, वो टीम टिश्यू कहलाती है। What is tissue? The team of cells is formed to do a particular job. This team is called tissue. जब सेल आपस में मिलते हैं और एक खास काम करते हैं, तो ये सेलों की टीम जो एक ख़ास काम करती है, स्पेसिफिक जॉब करती है, उसे क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है और ब्लड टिश्यूज़ हैं। इसी तरह प्लांट में एपिडर्मल टिश्यू है जो सबसे बाहर होता है, फिर मेसोफिल टिश्यू है जो उसके अंदर होता है, और फिर वस्कुलर टिश्यूज़ हैं जिनके ज़रिए पानी और नमकियात जज़ब किए जाते हैं और ख़ुराक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है। तो जब टिश्यूज़ आपस में इकट्ठे होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और उन टिश्यूज़ की एक टीम बनती है, तो उस टीम को क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। व्हाट इज ऑर्गन? टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर एंड वर्क लाइक अ टीम। दिस टीम ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड एन ऑर्गन। यानी जो टिश्यूज़ की टीम है, जब टिश्यूज़ इकट्ठी होती हैं, वो मिलकर कोई एक ख़ास काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? आर्गन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्गन जो है वो जैसे इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर हार्ट है, दिल, आई, आंखें हैं, लंग्स, फेफड़े हैं, स्टमक, मैदा है, किडनीज हैं, गुर्दे हैं। प्लांट्स में अगर हम देखें तो उसमें रूट्स हैं, शूट जो है वो है, और लीफ है, ये उसके आर्गन है। जब आर्गन की टीम आपस में मिलती है, आर्गन आपस में मिलते हैं, तो वो टीम जो है वो कहलाती है आर्गन सिस्टम। What is organ system? Organs join together and work like a team. This team of organs make an organ system. तो आर्गन की जो टीम है वो मिलके जो एक खास काम करते हैं, उसे हम आर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का निज़ाम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह नर्वस सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है। प्लांट के अंदर रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, वस्कुलर सिस्टम है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और जब ये सिस्टम आपस में मिलते हैं तो फिर उससे एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सबसे बुनियादी चीज़ सेल है। सेलों की टीम, जो सेल आपस में मिलते हैं तो उससे एक नई चीज़ बनती है और वो है टिश्यू। टीम ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और फिर टिश्यूज़ की जो टीम है वो आर्गन उसे कहते हैं, और आर्गन की टीम को आर्गन सिस्टम कहते हैं। और आर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो उससे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे बुनियादी चीज़ सेल है, सेलों से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से फिर आर्गन बनते हैं, आर्गन से आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ जो है वो इस तरह चलती है, इस तरह बनती है। और हम सोचें कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं, पौधों और हमारे दरमियान क्या चीज़ कॉमन है और हमारे दरमियान क्या फ़र्क है। तो आज का ये टॉपिक था सेल के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, आर्गन के बारे में और आर्गन सिस्टम के बारे में। Have you ever just stopped and wondered, how does something as complicated as you or, a giant tree actually get put together? Well,
We're about to go on a journey from the super microscopic all the way to the magnificent to uncover the fundamental blueprint for all living things. So let's start with a little question. What could you possibly have in common with that houseplant in your window or the grass outside? I mean, you seem worlds apart, right? But the answer is surprisingly simple, and it's really the key to understanding all of biology. And the answer, of course, is the cell. This is the starting point. It's the absolute ground floor for every single living thing on this planet. It's the one thing that connects us all, from the tiniest bacteria to the largest whale. What you're looking at here are the two main blueprints for life. On the left, that's an animal cell, like the ones that make you up. And on the right, a plant cell. Now, yeah, they've got some different parts, but they share the exact same fundamental purpose: to be the basic unit of life. And here's the really crucial point. A cell isn't just a structural piece, like a brick in a wall. It's also the basic unit of function. Each one is its own tiny, living engine, performing all the jobs necessary to be considered alive. But a single cell can't build a complex organism all by itself. I mean, just like in any huge project, you need teamwork. This is where we level up from a single worker to a whole specialized crew. This is the next level of organization. Cells that have similar jobs all start to group together. Think of them as specialists, right? You've got muscle cells for contracting, nerve cells for sending signals, skin cells for protection. When these specialists team up, they form what we call a tissue. And we see this kind of specialization in both animals and plants. For animals, muscle tissue creates movement, while nervous tissue handles all the communication. In plants, epidermal tissue kind of acts like their skin, and vascular tissue is like a plumbing system, transporting water and nutrients. Each tissue has a very specific and very crucial role. Okay, so we have our specialist teams, our tissues. So what's next? Well, the organization gets even more complex. Now, different teams of tissues start to join forces to tackle even bigger jobs. And this team of tissues is what we call an organ. Your heart, for example, it isn't just one type of tissue. It's got muscle tissue to do the pumping, nervous tissue to control a rhythm, and other tissues too, all working together for one major function: circulating your blood. And we're all super familiar with organs. In us, it's our lungs for breathing, our stomach for digestion. In a plant, it's the leaf, an organ designed for photosynthesis, or the root, which is an organ designed to absorb water and nutrients right out of the soil. We're almost at the top of the pyramid. We have individual cells, then teams of cells called tissues, and then teams of tissues called organs. So now it's time for the organs themselves to form the ultimate team. This brings us to the organ system. This is a collection of different organs all cooperating to manage a major life-sustaining process for the entire organism. This is the real high-level management. For instance, your digestive system isn't just your stomach. It's a whole team. Your esophagus, stomach, intestines, liver, they're all working together to process your food. And plants have this too. Their shoot system includes the leaves, stems, and flowers, all working in concert to capture sunlight and reproduce. So we've gone from one single cell all the way up to a complete system. Let's just take a second and recap this incredible hierarchy of life. It all starts with the individual worker, the cell. Then these cells form specialized teams, and that creates tissues. Those teams of tissues then assemble into a larger structure with a bigger job, the organ. And finally, multiple organs cooperate as a complete system to run the whole show. This right here is the key takeaway. If you remember nothing else, remember this simple, powerful progression. This is the blueprint for all complex life on Earth. From a single cell to a functioning system, it's really just a story of increasing complexity and cooperation. So that leaves us with a final thought. Every single level of our biological being is built on smaller parts working together for a greater purpose. If cooperation is the fundamental rule for life itself, what does that tell us about our own world? Thanks for joining this explainer.